हेलो एवरीवन। सो हम लोग रियल नंबर खेल रहे थे, उसमें एचसीएफ और एलसीएम देख रहे थे। हम आपको बता चुके थे फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो इस सीरीज में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे थे। ओके, तो हम एक और क्वेश्चन लेके आए यहाँ पे। सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच इफ वी डिवाइड 109, 125 and 165 leaves the same remainder. Okay, so we need to find out that largest number by which if we divide 109, 125 and 165, if we divide these numbers by that number, it leaves the same remainder. Remainder same रहता है, तो solve कैसे करें? Okay, so let the required number be x. Okay, and when we divide 109, 125 and 165 by x, okay, it leaves Q1, Q2 and Q3 as quotient and R as remainder, since the remainder is constant in all the cases. ओके, तो हम यहाँ पे क्या मान लिए कि वह रिक्वायर्ड नंबर x है, जिससे हम इस 109, 125 और 165 को डिवाइड करें तो Q1, Q2 और Q3 क्वेश्चन बचता है और R कोई रिमाइंडर है। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या होना चाहिए आपका कि दिस 109 should be equal to x into Q1 प्लस R। ओके, बिकॉज 109 को डिवाइड कर रहे हैं x से, क्वेश्चन Q1 बच रहा है, रिमाइंडर R है। ओके, लेट इट बी इक्वेशन 1। 125 should be equal to x into Q2 plus R, let it be equation 2, and 165 is equal to x into Q3 plus R, let it be equation 3। अब क्या करें हम? ओके, सो हम यहाँ पे इक्वेशन 2 को 1 से, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, बिकॉज इसको हम R से इंडिपेंडेंट करना है, तो यह क्या हो जाएगा आपका 125 इज इक्वल टू x इंटू Q1 प्लस R है, and 109, ओके यहाँ पे, ओके इट्स ओके, सो 109 इज इक्वल टू x इंटू Q2 प्लस R है। ओके, सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ देम, सो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, सो दिस R विल बी कैंसल्ड, तो ये क्या हो जाएगा 16 is equal to x into Q1 minus Q2. Okay, let it be equation 4. Okay, similarly equation 3 minus 2 करते हैं हम। Okay, equation 3 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 165 इज इक्वल टू x इंटू Q3 प्लस R, एंड 125 इज इक्वल टू x इंटू Q2 प्लस R। ऑन सब्ट्रैक्टिंग देम it will be 40 is equal to x into
Q3 minus Q2. Let it be equation 5. Okay? And similarly, हम यहाँ पे एक step और करेंगे थोड़ा सा. Okay? The board is too small. Okay. So, similarly, equation 3 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं. अब आप समझेंगे क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे. इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1. So it will be 165 is equal to x into q3 plus r, and 109 is equal to x into q1 plus r. We are subtracting both of this equation, so it will be 56 is equal to x into q3 minus q1. Okay, let it be equation 6. Okay, so हम यहाँ पे इतना क्यों कर रहे थे. Okay, so यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं. Since q1 and q1, q2, q3, these all are the integers. Okay, so इक्वेशन 4 को हम देखने से क्या दिख रहा है हमको कि 16 is equal to x into q1 into q2, q1 minus q2. Okay, and since q1 and q2 are integers, so q1 minus q2 भी integer होगा. That means x into some integer के फॉर्म में 16 should be equal to x into some integer. That means x should be the factor of 16. Similarly, q3 and q2, both of these are the integers. So q3 minus q2 must be an integer. So it is in the form of x into some integer. That means x should be the factor of 40. Similarly, x should be the factor of 56. Okay, so we need to find out the value of x. तो यहाँ पे हम इक्वेशन 4, 5 और 6 से क्या दिख रहा है. x आपका 16, 14, 40 और 56 का कॉमन फैक्टर होना चाहिए. Okay, so therefore from equation, okay, I'm erasing this one. Okay, so therefore from equation 4, 5 and 6, 5 and 6, x must be the factor, must be the common factor of 16, 40 and 56. Okay, and since we have to find out the largest number, okay, so therefore required number, okay, should be the HCF of 16, 40 and 56. Okay, and it is not a big deal to find out the HCF of this number. Okay, so therefore now we need to find out the HCF of this one. So therefore now 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 5. 40 is equal to, sorry, 2 into 2 into 2 into 2. It will be 2 into 2 into 2 into 5, and this will be 2 into 2 into 2 into 7. So therefore HCF will be equal to, okay, 2 into 2 into 2, that is equal to 8 answer. Okay, समझ में आ गया. So अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. Okay, so next question, explain why 13 into 11 into 7 plus 13 is composite. Okay, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है, determine whether this 13 into 11 into 7 plus 13 is composite or prime. Okay, so अब इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे. हम we know that what are the composite and what are the prime numbers. Okay, so prime number कहने का मतलब which has exactly two factors. Okay, and composite means the numbers which are having more than two factors, they are the composite numbers. So in order to prove that they are composite number, we need to prove here that
दे आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके, सो चलो ये क्या हो गया 13 इंटू 11 इंटू 7 प्लस 13 इज देयर. ओके, so we are seeing here that 13 can be taken as the common from two of the terms. Okay, so what is remain with us 11 into 7 प्लस यहाँ से 1 बचेगा. अब यहाँ पे यह तुमको सिंपल ही नजर आ रहा है 13 और यहाँ से एक फैक्टर ये है कम से कम और 1 तो फैक्टर है, तो ये कंपोजिट ऐसे ही हो गया. इसको हम थोड़ा सा और एक्सपांड कर लेते हैं. सो इट विल बी 13 इंटू 11 7 are 77 plus 1 78. Okay, so further it can be factorized as even 1 is the factor. Okay, so since it has more than 2 factors, so therefore it is a composite number. Okay, this is the answer. Okay, so अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं फिर से. So next question, there is a circular path around a sports field. Okay, स्पोर्ट्स फील्ड है आपका, उसका सर्कुलर पाथ है. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. ओके, सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगाती है. ओके, 18 मिनट्स में. ओके, एंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, एंड रवि 12 मिनट लेता है. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at the same time and go in the same direction. Okay, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते, they are both of them are starting from the same point in the same direction at the same time. After how many minutes will they meet again at the starting point? दोबारा फिर कितने बजे कितने टाइम में वो दोबारा साथ मिलेंगे. Okay, so try to understand the question. Okay, so क्या कह रहा है कि सोनिया एक सर्कुलर पाथ है. सोनिया आपका प्रत्येक 18 मिनट में राउंड लगाती है. ओके, मतलब फ्रॉम ए, सपोज फ्रॉम ए, सोनिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो ये यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा पहुंचने में 18 मिनट लेगी, फिर दोबारा करने पे फिर 36 मिनट पे भी साथ हो जाएंगी, एंड देन 54 मिनट पे साथ हो जाएंगे, एंड सो ऑन. सिमिलरली रवि प्रत्येक 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है. मतलब रवि इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो रवि यदि यहाँ से स्टार्ट किया देन 12th मिनट में आएगा, देन फिर 24th मिनट में आएगा, देन 36th मिनट में आएगा. सो अब कह रहा है कि दोनों सब दोबारा कब साथ मिलेंगे. ओके, सो क्लियरली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सोनिया कब कब आएगी, जब सब साथ स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, दोनों बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम. तो सोनिया प्रत्येक 18 मिनट में चक्कर लगाती है, मतलब 18वें मिनट में आएगी, देन 36 मिनट में, देन 54th मिनट में, एंड 72nd मिनट में, एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली रवि प्रत्येक 12th मिनट में करता है, तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम टाइम एट द सेम टाइम. सो देन 12th मिनट में, देन 24th मिनट में, एंड 36th मिनट में, एंड सो ऑन, ऐसे ही ऐसे. ओके, सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर. सो हमको यहाँ पे निकालना है एलसीएम, किस समय वो दोबारा फिर साथ मिलेंगे इसी समय पे. ओके, सो सॉल्यूशन. ओके, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे. सो एलसीएम ऑफ 18 and 12. Okay, so that is equal to, and so therefore LCM will be 2 into 3 into 2 into 3. Okay, that is 36. Okay, यहाँ पे दिख भी रहा है कि सोनिया प्रत्येक 36 मिनट पे ये
सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट इज द कॉमन इन बोथ ऑफ देम। ओके, सो कहने का मतलब 36 मिनट के बाद वह आपका दोनों साथ फिर मिल जाएंगे। सो देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। Okay, and this should be the answer. Okay, so thus you need to understand the question and वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो थोड़ा हम सोचे तो LCM अब गिवन नंबर से या तो उसके बराबर या उससे ग्रेटर ही होंगे। ठीक है, तो जब भी आंसर आपको लगे कि आपको गिवन फिगर से अधिक होना चाहिए वहां पे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और जहां पे एचसीएफ क्या होता है, आपका गिवन नंबर्स के बराबर या उससे कम ही होगा। तो जब भी लगे कि आंसर इससे कम आना चाहिए, गिवन नंबर से कम आना चाहिए, वहां पे एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।